Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss about the applications of biotechnology in environment, that is also called the blue biotechnology. The most important topic at the threshold of 21st century are the environment and biotechnology. It is a connection of environmental issues, environmental problems with the advances in biotechnology. The advances in biotechnology are when used to remediate, to solve the environmental problems. That is the application of biotechnology in the environment. Environmental biotechnology mainly focus on clean and green environment, non-toxic substances uh, reduce the toxic compounds, reduce the toxic substances that have the adverse effects on the environment, on the living organisms, and that disturb the ecosystem. And it is mainly focused on the eco-friendly environment, वो environment जिसमें तमाम organisms अपने अपने दायरा अख्तियार में, अपने दायरा कार में रहते हुए मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करें, उसमें कोई ऑर्गेनिज्म भी किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब ना हो. सो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का मेन फोकस है क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, नॉन टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कोई टॉक्सिन्स, कोई पोल्यूशन ना हो, और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट. इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट कौन सा होगा? वो एनवायरनमेंट होगा जिसमें तमाम जानवर, तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने अपने हैबिटेट में फ्रीली लिव कर सकेंगे और अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको इजीली, उनको फ्रीली शेयर कर सकेंगे. Environmental biotechnology, it is also called the blue biotechnology. It is used for solving environmental problems and ecosystem. That is the environmental biotechnology. It is applied and used to study the natural environment. It is used to study natural environment, to clean the environment. According to the International Society for Environmental Biotechnology, the environmental biotechnology can be defined as an environment that helps to develop, efficiently use, and regulate the biological system and prevent the environment from pollution or from contamination of land, air, and water. So we have to produce clean, green, and eco-friendly environment. That is the by use of the biotechnology. That is the environmental biotechnology. Environmental biotechnology mainly play a very important role in different areas. There are different types of applications of environmental biotechnology: bioremediation, biotransformation, biomarkers, biofuel production, biosensors, molecular ecology, and biomining. ये तमाम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे हम एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट बना सकते हैं. Starting with the bioremediation. Bioremediation, it is a combination of two words, bio and remediation. Bio, that is the living organisms, life, and remediation, to solve the problem, to reduce the pollution, to reduce the risk for living organisms. So when we use living organisms to solve the problems, when we use living organisms to decontaminate the environment, that is the bioremediation. तो बायोरिमिडिएशन एक्चुअली इट इज अ क्लीनिंग प्रोसेस. ये क्लीनिंग प्रोसेस है जिसमें हम पोल्यूशंस को, जिसमें हम टॉक्सिन्स को, जिसमें हम जितने भी हैजर्डियस एजेंट्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उनको उनके रिस्क को ऑफ द जो टॉक्सिसिटी है उसको रिड्यूस करते हैं. तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम यूज करेंगे फॉर द रिमिडिएशन, फॉर द सॉल्यूशन, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, दैट इज द बायोरिमिडिएशन. द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अप द हैजर्डियस substances into non-toxic compound is called bioremediation. जब hazardous या toxin compound को non-toxic compound में convert करेंगे, that is the bioremediation. It's this process majorly used for any kind of technology that clean up, that uses natural microorganism. It's a cleanup process. It's a cleanup mechanism that uses natural microorganisms. और इन्हीं natural microorganisms को जो जिनके पास naturally ability है to detoxify the pollution or agents that can be engineered, उनको हम engineer भी कर सकते हैं for speed up the bioremediation process. Biotechnologists are also trying to engineer microbes. Naturally जो bioremediation process करने वाले जो एजेंट्स हैं, बैक्टीरिया, उनको हम उनसे जीन लेकर जो
न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंजीनियर नहीं कर सकते, जो पोल्यूशन में ज़्यादा ग्रोथ जो पोल्यूशन में जिनकी ज़्यादा ग्रोथ होती है उनमें वो जीन इंसर्ट करके उनकी रिमेडिएशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजिस्ट आल्सो ट्राइंग टू इंजीनियर माइक्रोब्स दैट कैन डिग्रेड क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड्स। हम उन कंपाउंड्स को जो ज़्यादा हार्मफुल हैं उनकी डिग्रेडेशन के लिए हम इंजीनियर भी कर सकते हैं माइक्रोब्स को अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो जीन जो ऑर्गेनिजम्स हैविंग द एबिलिटी टू डिटॉक्सिफाई डेंजरस कंपाउंड्स, उनके जीन्स को हम जो ऑर्गेनिजम्स डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते उनमें इंसर्ट करेंगे, उनको भी बायोरिमेशन के काबिल बना सकते हैं। These microbes could be used in wastewater treatment plants or by manufacturers before the compounds are ever released into the environment. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बायोरिमेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या मैन्युफैक्चरर्स जो कंपाउंड्स को एनवायरनमेंट में रिलीज करने से पहले उनको भी ट्रीट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोरिमेडिएशन प्रोसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बायोरिमेडिएशन मेनली इंक्लूड इट इज द soil bioremediation, solid waste bioremediation and bioremediation hydrocarbons। मेनली हम बायोमेशन को दो टेक्निक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स सीटो बायोमेशन एंड इन सीटो बायोमेशन। एक्स सीटो बायोमेशन वी हैव टू आइसोलेट द कंटेमिनेशन फ्रॉम द कंटेमिनेटेड एरिया, एंड इन सीटो वी हैव टू ट्रीट द कंटेमिनेशन और कंटेमिनेटेड पोल्यूशन एट द सेम पॉइंट एट द सेम एरिया, दैट इज द इन सीटो। Microorganisms which show very high potential for the degradation of oil, pesticides, and fertilizers that belong to genera of bacteria Pseudomonas, Bacillus, and Micrococcus। ये तीन बैक्टीरिया पेस्टिसाइड्स, ऑयल और फर्टिलाइजर जो एग्रीकल्चर में लोग इस्तेमाल करते हैं, किसान इस्तेमाल करते हैं, उनको डिग्रेडेशन के लिए तीन बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सीडोमोनास, बेसिलस एंड माइक्रोकोकस। द फंजाई इंक्लूड द कैंडिडा, क्लेडोस्पोरियम, टोरोप्सिस एंड द ट्राइकोडर्मा। ये फंगस जो स्टैंड्स हैं ये भी बायोरिमेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल सीडोमोनास प्यूटिडिया दैट इज यूज्ड फॉर द अल्कलाइन डिग्रेडेशन, मिथेनोट्रोफिक बैक्टीरिया यूज्ड फॉर डिग्रेड वैरायटी ऑफ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, Pseudomonas fluorescens is used for the naphthalene and the silicate degradation. Acronobacter xylose oxidants toluene degradation, and phenolachide cryosporium, that is oxidation of the phenol, amines, hydrocarbons, and ethers. बायोरिमेडिएशन की जो टेक्निक्स हैं, देयर आर अदर टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर द रिमीडिएशन ऑफ द पोल्यूशन। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, वन इज कॉल्ड द बायो ऑगमेंटेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड बायोस्टिमुलेशन। What is bioaugmentation? Bioaugmentation actually it is the insertion or inoculation of the microbes that have ability to degrade the pollution, to degrade the toxins, to degrade the toxic compounds। जब हम किसी भी polluted area में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करके उनको इनोकुलेट करेंगे टू इंक्रीज द बायोरिमेडिएशन प्रोसेस, दैट इज द बायोऑगमेंटेशन। इसमें हम इंजीनियर भी कर सकते हैं माइक्रोब को, या नेचुरली जो ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी है डिग्रेडेशन की उनको भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब हम नेचुरली ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट करेंगे दैट इज बायोऑगमेंटेशन। when we increase the nutrients, when we add the nutrients for the growth of the microorganism, एक specific जो लोकेशन है, जो polluted area, वहां पे माइक्रोऑर्गेनिज्म तो मौजूद हैं, लेकिन उन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की जो ग्रोथ है उसको एनहांस करने के लिए when we add nutrients, that is called the biostimulation, that is called the biostimulation। Biostimulation is the addition of the microbes and biostimulation is the addition of the nutrients। There are different types of the bioremediation depending upon the types of agents that degrade the pollutions. It may be the phytoremediation, that when the plants are used for the degradation. It may be the microbial remediation or the microremediation। microbial में microorganism को इस्तेमाल करेंगे और microremediation में हम fungus को specifically इस्तेमाल करेंगे। Biotransformation, when we modify the toxic substances into useful substances, that is called the biotransformation। The change that take place the changes that take place in the biology of the environment, which are changes of the complex compound to simple non-toxic, is called the biotransformation।
Simple, non-toxic. Mainly it is used in the manufacturing sector where toxic substances are converted into byproducts. इसमें हम जो toxic substances हैं उनको हम byproducts में, useful products में convert करते हैं. That is the biotransformation. Biomarker, these are actually used for the identification, for marking a specific system or specific pollution. किसी भी टॉक्सिन को मार्क करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पोल्यूशन को मार्क करने के लिए जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे, कंटेमिनेशन को मार्क करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द बायोमार्कर. दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी गिव्स रिस्पांस टू केमिकल्स दैट हेल्प्स टू मेजर द लेवल ऑफ डैमेज caused और द एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक और पोल्यूशन इफेक्ट काज. तो टॉक्सिक एक्सपोजर या उसकी पोल्यूशन जो इफेक्ट काज हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द बायोमार्कर और द बायोमार्किंग सिस्टम. इन अदर वर्ड, बायोमार्कर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल मार्कर्स. The major use of this application helps to relate the connection between the oil and its sources. Connection between oil and sources. Oil detection के लिए और उसके sources को detection के लिए we mainly use the biomarker. Biofuel energy, bioenergy. बायोफ्यूल और बायो एनर्जी एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इसमें इसको हम बायो गैस भी बोलते हैं, इसको हम बायो एनर्जी भी बोलते हैं और बायोफ्यूल भी बोलते हैं. इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं और इट इज़ द मेनली यूज ऑफ द एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट व्हेन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी और द फ्यूल बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द बायोफ्यूल. द कलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, biomass, biofuels, and hydrogen are called the bioenergy. The use of this application of environmental biotechnology is in the industry. Industry में भी biofuel production इस्तेमाल हो रहा है. Domestic and space sectors में भी bioenergy या biofuel का इस्तेमाल हो रहा है. As per the recent need, it is concluded that the need of the clean energy out of these fuels and alternative ways of finding clean energy is the need of the hour. So it is the most important energy. It is a clean and green energy. It make the environment eco-friendly. It make the environment clean. It make environment free from the pollution. एक तो ये जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, डिफरेंट टाइप्स जो वेस्ट हैं उनको हमने एक जगह पे डंप करना है, उससे फ्यूल बनाना है. इससे एक तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल से भी छुटकारा मिल जाएगा, दूसरा गैस और फ्यूल भी मिल जाएगा. सो इसके डुअल एडवांटेजेस हैं. One of the pioneer example of green energy are the waste collected from the organic and biomass waste. These waste help the use of avoid the pollution issue caused in the environment and also produce the energy. ये collect करेंगे उससे pollution भी कम हो जाएगी और एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाएगी. बायोफ्यूल, there's a first generation biofuel, इसमें बायोअल्कोहल है, बायोडीजल और बायोगैस. Second generation biofuel include the cellulosic biofuels, biohydrogen and bioethanol, and third generation biofuels, there's the algae fuels. Biosensors are used to detect in the biological entity or to monitor level of certain chemicals. इसके दो एस्पेक्ट हैं बायोसेंसर के. When we use biological entity या living organisms to detect the level of chemical, or when we use a chemical to monitor the biological entity, that is the biosensor. Biosensor uses the biological entity or living organism or bacteria to monitor level of certain chemicals. किसी भी एरिया में केमिकल का लेवल डिटेक्ट करने के लिए जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे, दैट इज अ बायोसेंसर. और व्हेन वी यूज chemicals to monitor level of certain biological entities, जब हम केमिकल का यूज करेंगे बायोलॉजिकल एंटाइटीज बायोलॉजिकल एजेंट्स के लेवल को डिटेक्ट करने के लिए, दैट इज द बायोसेंसर. और फॉर एग्जांपल द डिटेक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन, that is by using the biosensor. Biosensor का mechanism क्या है? The mechanism of biosensor, it may be the different types of bioreceptor हम use कर सकते हैं. इसमें bioreceptor हम next time discuss कर सकते हैं. ये एंटीबॉडी हो सकती है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये कोई एंजाइम भी हो सकता है. Immobilized enzymes, microorganisms, immuno agents, DNA or whole cells, these can act as receptors. Then डिटेक्शन के तौर पर. देन ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? उसको डिटेक्ट करेगा. इलेक्ट्रिकल और पोटेंशियोमीटर, एम्पलीमीटर, ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शंस, फ्लोरेसेंस रिफ्लेक्शन और पीजोइलेक्ट्रिक, these are different types of transducer. It will amplify
increases signals and data will be processed, or microelectronics will detect the or process the data, and detection will be observed. Types of biosensor based on the transductional signal: electrochemical, optical, piezoelectrical and thermal सेंसर. ये ट्रांसडक्शनल सिग्नल की बेस पे डिफरेंट टाइप्स हैं, और बायो रिकग्निशन की बेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिकग्निशन के लिए, एंजाइम्स को या एंटीबॉडीज को रिकग्निशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. Uses of biosensors, mainly these are used for the detecting level of the toxin in ecosystem. टॉक्सिन डिटेक्शन के लिए, डिटेक्टिंग एयरबॉर्न पैथोजेंस, पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. That is for anthrax or other types of pathogens. Monitoring blood glucose level, glucometer, that is the most important application or example of the biosensor. Molecular ecology. Molecular ecology, mainly it is a field of the evolutionary biology that is applying molecular population genetics and molecular phylogenetic techniques. It is the to look at the biodiversity of different population. Different population की biodiversity क्या है? What is the size? What is the different types of organism present in the ecosystem? Molecular ecology is also used to ensure they are not at risk of getting extinct. किसी organisms की extinction के लिए. So, for the detection of the extinct risk of the different types of living organisms, so molecular ecology mainly apply in different area of phylogeography, phylogenetic analysis, gene flow in the ecosystem, relatedness of different types of the living organisms, and ecological interaction, the interaction between different types of living organisms. By mining, the remarkable ability of certain microorganisms to transform chemical is being exploited for environmental cleanup. एक तो हम उनकी जो एबिलिटीज है उनको एनवायरमेंटल क्लीनअप के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब एनवायरमेंटल क्लीनअप में जो बायोरिमेडिएशन में जो क्लीनअप के लिए इस्तेमाल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया secrete different types of enzymes, and these enzymes sometimes accumulate the metals in their internal parts. उनको हम फिर बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. Many bacteria can extract heavy metals, copper, lead, nickel, gold, iron from the environments and incorporate the metals into the compounds such as copper sulfate, lead sulfate, which are readily recoverable. उनको फिर बाद में हम रिकवर कर लेते हैं. Genetically engineered microbes may become important in both mining and cleanup highly toxic mining waste. Genetically engineered microbes को mining में भी, that is the extraction of the metals from their ores, and the cleanup of the highly toxic mining waste को भी हम उसके लिए genetically engineered microbes इस्तेमाल कर सकते हैं. Benefits of the environmental biotechnology. The major benefits of environmental biotechnology are it helps to keep our environment safe and clean for the use for the future generation. It mainly emphasizes on the sustainable development, make the resources available for the future generation. That is called the sustainable development. तो जब इन्वायरमेंट क्लीन होगा, जब इन्वायरमेंट सेफ होगा, तो फ्यूचर जो जनरेशंस हैं वो रिसोर्सेज को, उनके लिए रिसोर्सेज सेफ रहेंगे और वो इजी रिसोर्सेज को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं. इट हेल्प्स द ऑर्गेनिजम्स एंड द इंजीनियर्स टू फाइंड यूजफुल वेज ऑफ गेटिंग अडॉप्टेड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन. जो एनवायरनमेंट चेंजेस हैं उनसे मुतालिक जो यूजफुल एडॉप्टेशंस हैं, और उसमें ताकि उस एनवायरनमेंट जो चेंजेस हैं उनको रिड्यूस किया जाए और जो environments को clean और green बनाया जाए. Environmental biotechnology helps us to avoid the use of hazardous pollutants and waste that affect the natural resources and environment. हमें जो pollutions free environment create करने के लिए hazardous pollutants से avoid करना होगा, और वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन कम से कम होगा, जो सब्सटेंसेस उनको रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस करना होगा. इट विल हेल्पफुल इन द क्लीनिंग एंड ऑफ द एनवायरनमेंट. The environmental biotechnology has a role to play in the removal of pollutants. It is becoming an advantage for the scientists and the environmentalists to find ways to convert the waste to reusable products. ये वो waste find करना है जिससे जो waste material है उनको reuse प्रोडक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सके. The application of environmental biotechnology are becoming a benefiting factor for the environment. The application include genomics, proteomics, bioinformatics, sequencing, and imaging processes are providing large amounts of information and new ways to improve or improvise the environment and protect the environment. When we use the genomics, proteomics, and bioinformatics for the sequencing of imaging and it will provide a large information, and it
will improve the environment, that will protect the environment from different types of hazardous agents, toxic agents. This is a summary of the whole discussion that we have discussed, that detection and monitoring, बायोसेंसर का इस्तेमाल करेंगे, बायो मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करेंगे, और मालिकुलर मॉनिटरिंग टेक्निक्स, and substitution of the non-renewable based renewable, production of biofuels as a substitute to existing fuel, जो existing fuels है उनको substitute तो हमने biofuel का इस्तेमाल करना है. So renewable sources को, renewable energy को impose करना है. Recovery and the waste utilization, recovery of metals and other valuable products from the waste. वेस्ट से भी हमने वेरिएबल प्रोडक्ट्स आइसोलेट करने हैं, रिकवर करने हैं, और मेटल्स को भी हमने रिकवर करने हैं उनके और से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हुए. रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी, रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी कैसे रिस्टोर होगी, एनवायरमेंट कैसे क्लीन और ग्रीन बनेगा, उसके लिए बायो रिमीडिएशन ऑफ द कंटेमिनेटेड साइट्स एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. So these are different areas in which we can use the biotechnology in the environment to clean the environment, to make the environment eco-friendly. In summary, we can say that we can use the biotechnology in the environment for the bioremediation, but for the biotransformation, for the biomarker, for the biosensors, and as a, biofuel production, ecology, molecular ecology, and mining extraction of different types of ores. This is all about the use of the biotechnology in the environment.